And now participants, everybody's there. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So yesterday we have stopped here after optimum operation of an impulse turbine and reaction turbine. These two curves were shown, and the importance of these curves was explained to you. Now let's go to further on the same lecture. So, you know, when a compressor or turbine works, rotates, axial flow turbine, axial flow compressor, there is one component of velocity which is in axial direction called CF, flow velocity. So without it, flow is not possible. So the problem is, a pressure drop across the rotor produces an end thrust equal to the product of the pressure difference and the area of the annulus in contact with the steam. For 50% reaction turbine, the thrust due to the change in axial velocity is 0. But the side thrust is nevertheless greater than that of an equivalent impulse turbine. And larger thrust bearings are fitted. The net end thrust can be reduced by admitting the steam to the casing at the midsection and allowing it to expand outwards to each end of the casing, or passing over identical sets of blades. This has the additional feature of reducing the blade height and a given wheel for a given total mass flow of steam. This is the example of two-flow turbine rotor in this photo, and you can see it's a huge turbine made in two parts, one on the right side, one on the left side. They are installed inlet takes place from the middle, from the center, and steam flows rightward and leftward. So as steam flows, its size increases. Blades at the right side are highest size, and blades on the left side are also highest size. In the middle, they are of smaller size. So high pressure is in the middle, and low pressure is at the side. So in every turbine, this part of the turbine will exert axial thrust to the right, and we need a thrust bearing, and this half will exert the pressure to the left side, and we need thrust bearing. But in this case, since right side force is balanced by left side force, so this thrust on right and left is controlled. If it was done in one part, only half of this in one-sided direction, then an entrance will be here and exit here. This left part did not exist. Then what would have happened? Just like in previous case, side thrust would have been created because of CF1 minus CF2. Because of that difference multiplied by annulus area, force will be exerted on one side. And this is symmetrical blading. Here, this is balanced. There is no side thrust. But in any other reaction turbine or impulse turbine, side thrust is always there because of CF. CF is the flow velocity. So this is the solution of this problem. So this type of flow turbines are called two-flow turbines. They are also called double axial flow or double exhaust turbine rotors. So now example 11.4 is relevant to this topic.
which is Parsons turbine, steam turbine with reaction blading, and its pressure is given, its velocity, blade velocity is given, and blade height is given at the mean radius, and angle is given 20 degree. Actual velocity of steam 3/4 of the blade. So velocity 3/4 of the blade velocity at the mean radius. तो actual velocity भी दिया हुआ 3/4 का मतलब 0.75 velocity the mean radius जो 90 मीटर पर सेकंड है तो उसका 0.75 निकालेंगे तो वो that will become axial velocity. इसमें ये सारा डेटा दिया हुआ है. Now RPM mass flow rate 9,000 kg per hour. Effect of blade tip thickness is ignored. Calculate rotational speed of the wheel. The diagram power and diagram efficiency, the enthalpy drop of the steam in this stage. So one stage is one set of stator and one set of rotor blades. So this is the annulus area. You can see this is root of the blades, and this is tip of the blade radius. So this are inner radius or outer radius. In between as a space which is given as a thickness h, and this area is called annulus area. So the blade velocity diagram and turbine blading annulus. So this is annulus and this is velocity diagram. You can see CB is not known, but we know alpha and we know 90, CI 90. We know CF. CF is 0.75 of this 90, and in this case you can draw this triangle. So once you draw it, you can calculate this beta angle, beta I, and this alpha I is equal to, this beta 2 is equal to alpha I because it's symmetrical grading. So CF is calculated, I told you 3/4 of the CD, and this is written here from the velocity diagram. CI is equal to sin alpha I. हमें alpha I दिया हुआ है, तो लास्ट टाइम किसी ने पूछा था जी ये ट्रायंगल कैसे ड्रा करते हैं, तो ये हर एक के अपना अपना हिसाब है कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है. प्रॉब्लम में आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा आई 20 डिग्री. अब ये एंगल कैसे ड्रा करें. सीबी तो आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें, आपको नहीं पता सीबी कितनी है, लेकिन सीएफ दिया हुआ है और सी ए आई दिया हुआ है और एंगल अल्फा आई दिया हुआ है. तो इन तीन डेटा की मदद से यू कैन ड्रॉ, और सी आई आप सी एफ आपने कैलकुलेट करना है. सी आपको सिर्फ ये दो चीजें दी है, अल्फा और सी आई की मदद से सी एफ कैलकुलेट हो गया. आप सी बी का फॉर्मूला है आरपीएम अगर दिया हुआ है तो नहीं 4/3 ऑफ द 30. सो इसका भी ये कौन सा डेटा दिया हुआ है देखें. 40 mm mean blade height is 40 mm and moving blade exit angle is 20, और प्रेशर दिया हुआ है और मीन हाइट दी हुई ब्लेड की. नाउ द एक्सियल वेलोसिटी दिया हुआ है और मास फ्लो रेट दिया हुआ है. तो अब आप देख रहे हैं कि ये 40 ये जब आपने CF निकाल लिया, CF जब आपने निकाल लिया तो इस वेलोसिटी ट्रायंगल से आप क्या कर लेंगे. देखिए CF आपको आ गया 30.78. तो अब इस फार्मूले से देखें कि अब आपको CB कैसे कैलकुलेट करें. ये ट्रायंगल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रायंगल है, ठीक है. इसकी ये साइड आपको मालूम है 90 मीटर 90, और ये साइड एंगल आपको मालूम है 20. अब CF भी आपको मालूम है, तो CB कैसे कैलकुलेट होगा. तो CB with the help of this angle you can calculate, and this is equal to 4 multiplied by CB is equal to 4 times 30 यानी 4 CF by 3. 4 CF by 3 यानी कि वो फार्मूले में है कि CF is 3/4 of the CB. Now A is the annulus area, or V is the specific volume of the steam. Then V is equal to VG at 2.7 bar. So from steam table you can find VF VG is equal to 0.668. M dot is equal to kg per second divided by 3600, because kg per hour था divided by 3 kg per second. तो यहाँ से आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया.
एरिया आपने निकाल लिया, प्रॉब्लम में दिया हुआ है या रेडियस दिया हुआ है, उसकी मदद से। उसके बाद एनुलस एरिया का ये फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो पाई डी इंटू एच, एच इज द ब्लेड हाइट, और जो है 2 पाई आर एनुलस एरिया की हाइट मल्टीप्लाइड बाई radius at mean. So where r is the mean radius and h is the mean blade height, so इसको आपने रख लिया तो r निकल आया 0.25. जब r आपको मालूम हो गया तो annulus area is equal to 2 pi r into h, and this is equal to 0.215 meter. Now n is pi d, blade speed, cb divided by 2 pi r, क्योंकि cb is equal to 2 pi r n. So n is equal to cb upon 2 pi r. So here you can calculate RPM also. So RPM is 30 rounds per second. Now diagram power is equal to m dot cp delta cw. ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव किया था. That is difference of ball velocity multiplied by blade velocity multiplied by mass flow rate power in watts and divided by 1000 it become kilowatts. Delta CW हमने ट्राइंगल से निकालना है, और that is 2 cos alpha I minus CB. तो ये आप अगेन ये कैसे आया, ये ट्राइंगल देख के आएगा. दोबारा ट्राइंगल को देखें, उसमें देखें डेल्टा CW क्या है और वो कैसे आएगा. ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल डेल्टा CW यहाँ से लेकर ये मेरे ये कर्सर देखें, इस राइट साइड कॉर्नर से लेकर इस लेफ्ट साइड कॉर्नर तक ये सारा डिस्टेंस डेल्टा CW है. आप इसको इन वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद से आप निकालेंगे. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इस ट्रायंगल से आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ट्रायंगल से आ जाएगा. तो टोटल उसका जो फॉर्मूला है वो ये बनता है डेल्टा CW is equal to 2 CI cos alpha minus CB, and this is equal to 128.1 meter per second. Diagram power उस फार्मूले में आपने रखा MCB delta CW and we get 13 kilowatt. Now rate of doing work is CB delta CW, and this we have calculated. Now energy input to the blade moving per stage. So energy input to the moving blade per stage. Moving blade एनर्जी होती है, इनलेट पे उसकी वेलोसिटी सी आई है और आउटलेट पे सी आई है. सो सी आई स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ब्लेड. नाउ सी आर I square is equal to CI square minus CB minus CA. This is called cosine law. ऊपर वाली वेलोसिटी ट्रायंगल लेकिन CR कैसे कैलकुलेट होगा, cosine law अप्लाई करने से you will get CRI. So once you get this, you can calculate energy input. So put it in this formula, and now you will get diagram efficiency with the help of this diagram efficiency formula. Now next item is rate of doing work per unit mass flow rate. ये तो हो गया. And enthalpy drop in the moving blades CRE minus CRI square divided by 2. So this is the formula. So relative velocity में जो difference हुआ, that is the moving blade है. moving blade में absolute velocity काउंट नहीं होती, relative velocity, यानी एयर भी फ्लो कर रही है, ब्लेड भी फ्लो कर रहा है, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी CR स्क्वायर माइनस CRI स्क्वायर बाय 2. तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस एट इनलेट एंड आउटलेट, that is equal to velocity, that enthalpy drop in the moving blades. So this is how reaction turbine calculations are done for steam turbines. So with this our reaction turbine it was done. Now new share is another document. So until now we have dealt with only steam turbines. Now we will deal with gas turbines. The difference between a steam turbine and gas turbine is, in a steam turbine, steam is the working fluid. And remember from thermodynamic 1, steam is not a gas. Steam is not an ideal gas.
PV is equal to MRT law cannot be applied on steam. It can be applied only on ideal gas where PV is equal to MRT. So that is why for gas turbine, where air is compressed and air is expended in the turbine, compressed in the compressor, then in the nozzle, it is expended to the turbine. And if it is reaction turbine, gas turbine is always reaction turbine. So one row of stator blades and one row of rotor blades is there. So stator and rotor both act as a nozzle also, but rotor blade acts to do the work also. So velocity and pressure both decrease in rotor in injection turbine. In case of gas, the difference is working substances, ideal gas, that is air. So on air we can apply PV equal to MRT law. That is why it is easy to calculate its temperature and pressure with the isentropic laws. Now, our objective of this lesson is, the topic was axial flow reaction gas turbine with twisted blade. So we will discuss also twisted blade theory, which is also called as theory of vortex blading. Vortex का मतलब twist, rotation. So twisted blade का मतलब ये है कि रूट पे कोई और एंगल है, मिडल में कुछ और एंगल है और टिप पे कोई और एंगल है, तो ब्लेड ट्विस्टेड होता है, सीधा सीधा नहीं है. वो जब ये ट्विस्ट होता है ब्लेड, तो वो क्यों होता है, उसका रीजन है कि रूट का रेडियस कुछ और है, मीन रेडियस जो है कुछ और है और टिप का रेडियस कुछ और है. वैसे जो स्टीम टरबाइन होती है उसमें ये रेशो बड़ा कम होता है, हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन में, तो टिप और रूट यानी कि ब्लेड की हाइट बहुत कम होती है, तो ये जो रूट टू टिप रेशो जो है ना बहुत हाई होता है, यानी अबाउट 70% होता है. तो अगर ये लेस देन 40% यानी 0.4 या उससे कम हो, टिप टू रूट टू टिप रेशो यानी ब्लेड की हाइट ज्यादा हो, तो उस सूरत में हमें रूट पे कुछ और ब्लेड एंगल मिलते हैं, मिडिल में कुछ और जिसको मीन रेडियस कहते हैं, मीन रेडियस के कुछ और ब्लेड एंगल्स बनते हैं अगर हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करें, बिकॉज ऑफ रेडियस डिफरेंट, और टिप पे रेडियस कुछ और है इसलिए उसकी ब्लेड वेलोसिटी डिफरेंट है. तो ब्लेड वेलोसिटी वेरीज विद रेडियस. अगर रेडियस डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो ब्लेड वेलोसिटी रूट, टिप और मीन रेडियस से डिफरेंट करती है. इसलिए ब्लेड को रूट पे भी डिजाइन करते हैं, मिडिल में भी डिजाइन करते हैं और टिप पे भी डिजाइन करते हैं, और इन सब को मिलाकर ब्लेड प्रोफाइल बनता है जो एक ट्विस्टेड ब्लेड होता है, यानी वो सीधा सीधा नहीं होता, वो गधे के कान की तरह, गधा आवाज होकर पीछे से आवाज सुनने के लिए कान मरोड़ता है, इस तरह वो ट्विस्टेड ब्लेड होता है. नाउ डिजाइनिंग जैसे तैयब करता है. The designing and manufacturing twisted blade is very expensive. This extra cost and time spent on the vortex blading should be weighed against the improvement in the efficiency of the axial turbine or axial compressor. तो आप देखते हैं कोई भी चीज इंजीनियर करता है तो वो फजूल वक्त ज़ाया नहीं करता, वो किसी चीज पे वक्त ज़ाया नहीं करता कि मगजखोरी करे, मैथमेटिक्स के अंदर उलझा रहे, कैलकुलेशन करता रहे, उसका नतीजा कुछ ना निकले, कोई फायदा ना हो, उल्टा कीमत बढ़ जाए. तो उस सूरत में हम ट्विस्टेड ब्लेड डिजाइन नहीं करते जब उसका कोई फायदा ना हो. तो अगर हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर लें किसी और तरीके से, लॉसेस वगैरह कम करते हैं, ब्लेड के लॉसेस, लीकेजेस, तो वो उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी. और अगर हम ट्विस्टेड ब्लेड डिजाइन भी कर लें, इतने महंगे, वो बनते बड़ी मुश्किल से हैं, डिजाइन बड़ी मुश्किल से होते हैं, और वो काम और उसकी वजह से कीमत उसकी टरबाइन की 1.5 गुना या 2 गुना हो जाए, तो मालिक तो रोएगा, वो खरीदेगा नहीं उसको, और तो वो कहेगा जी वो जो मेरे साथ वाला फैक्ट्री है उसमें तो बड़ा सस्ता है और ये बड़ा महंगा है और मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है प्रोडक्शन की, तो वो कोई खरीदेगा नहीं. तो ऐसे इंजीनियर का कोई फायदा नहीं है जो इतनी मेहनत भी करे, वो कहेगा जी मैंने रॉकेट ईजाद कर लिया, लेकिन पैसे किसी के पास नहीं उसको खरीदने के लिए. तो इसलिए देखना है कि इसका फायदा क्या होगा. अगर अच्छा फायदा होता है, एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है और इम्प्रूव ब्लेड, ट्विस्टेड ब्लेड बनाने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी की बचत होगी, उसकी कॉस्ट एनर्जी कितनी ज्यादा है कि वो जितना एक्स्ट्रा पैसे आपने खर्च किए 2, 3, 5 साल में वापस मिल जाएंगे. तो फिर तो बात बनती है कि आप उसको ट्विस्टेड ब्लेड पे काम करें. रूट टू टिप रेशो इक्वल टू लेस देन 0.4 मेक्स इट फीजिबल. तो एक लोगों ने एनालिसिस कर लिया है, कैलकुलेशन करके देख लिया है और मार्केट रेट पता करके, मार्केटिंग रिसर्च करके पता कर लिया है कि अगर रूट टू टिप रेशो 0.4 हो तो फिर ये फीजिबल है, क्योंकि उसमें लॉसेज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको ट्विस्टेड ब्लेड के डिजाइन के अलावा कोई चारा नहीं. तो यानी कि लो रूट टू डिजाइन रेशो का मतलब ब्लेड की हाइट बहुत ज्यादा है ना.
it is according to vortex theory of assigning twisted, designing twisted blade with varying blade angles is called vortex theory. Now we will discuss about this later on. Now the set of conditions, there are certain set of fluid mechanics में आपने अगर पढ़ लिया fluid mechanics 2 पढ़ लिया आपने, अनम्यूट करके बात करो भाई कोई बंदा, आपने अगर फ्लूइड मैकेनिक्स एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया है या फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट पढ़ लिया है तो उसमें आपको ये चीजें डिस्कस होती हैं. तो वॉर्टेक्स ब्लेडिंग इज द नेम गिवन टू अ ट्विस्टेड ब्लेड्स डिजाइन यूजिंग 3 डायमेंशनल फ्लो इक्वेशन. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में 3 डायमेंशनल फ्लो इक्वेशन बनती है इन ऑर्डर टू डिक्रीज फ्लूइड फ्लो लॉसेस. रेडियल इक्विलिब्रियम यानी कि एक फ्लूइड का एक वो एलिमेंट लेते हैं, क्यूबिकल एलिमेंट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और देखते हैं कि इसके ऊपर रेडियल फोर्सेस, नेट रेडियल फोर्सेस जीरो आ जाएं तो वो रेडियल इक्विलिब्रियम कहलाता है. तो अब फ्लूइड सिर्फ रेडियली मूव नहीं करेगा, सिर्फ एक्सियली मूव करेगा, एक्सियली और टेंजेंशियली मूव करेगा. और रेडियल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैन बी डिलीवर. अब तक हमने टू डायमेंशन एनालिसिस किया है, रेडियल फ्लो की बात की है, रेडियल यानी कि सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात की है, वर्न वेलोसिटी की बात की है, ब्लेड वेलोसिटी की बात की जो कि टेंजेंशियल है, और एक्सियल फ्लो की बात की है. तो ये सारा जो है ना 2 डायमेंशनल बन गया, एक एक्सियल डायरेक्शन और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन. ये तीनों डायरेक्शन टेंजेंट ऑन द व्हील, एक्सिस, रेडियस, दे आर ऑल at 90 degree but in different planes. So एक प्लेन में सिर्फ 2 फोर्सेस ली जा सकती हैं. तो 3 डायमेंशनल में तीनों फोर्सेस आप लेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में. तो एक्स वाई जेड तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये रोटेटिंग व्हील है, सिलेंडर है और वो जो है शाफ्ट है, तो हम उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेते हैं. तो these 3 conditions are satisfied for vortex theory. यानी कि तब जो है रेडियल इक्विलिब्रियम उस वक्त होगा जब CF is equal to constant throughout the blade, CV multiplied by delta CW यानी specific work output is constant, and CWR इसको हम कहते हैं free vortex condition. Free vortex का मतलब at any radius, product of radius multiplied by CW यानी torque at any radius is constant. So CW multiplied by R is constant, where R is the radius blade at any point. इसको हम कहते हैं free vortex condition, तीसरी वाली. लेकिन एक फ्लूइड का एलिमेंट 3D एनालिसिस में बैलेंस नहीं हो सकता रेडियली जब तक उसको ये तीनों कंडीशंस पूरी ना हो जो ऊपर दी गई. नाउ सिंस द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट इज कांस्टेंट और द एनुलस इट कैन बी कैलकुलेटेड एट द मीन रेडियस से एंड मल्टीप्लाइड बाय द मास फ्लो रेट. तो मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय अब तीनों रेडियस पे जो है ना अलग अलग हम उसका वो स्पेसिफिक वर्क कैलकुलेट नहीं करते, हम मीन रेडियस पे मास फ्लो होता है. फॉर्मूला क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया. एरिया इज एनुलस एरिया, CF इज द एक्सियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रो इज द डेंसिटी एट मीन रेडियस. तो हम एक मीन रेडियस लेके उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं हाइट से मल्टीप्लाई, हाइट मल्टीप्लाइड बाय पाई डी एट पाई आर एट मीन रेडियस, तो वो उसका एनुलस एरिया बन जाता है. तो इससे जो है अच्छा टाइम नियर कंप्लीशन है तो उससे मास फ्लो रेट आएगा. लेकिन डेंसिटी चूंकि चेंज हो रही है तो हमें मीन डेंसिटी लेनी होगी. रो एम इज द मीन डेंसिटी. तो पूरे व्हील में मीन डेंसिटी एज्यूम करके हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं. तो ये इसकी डिटेल जो है हमने गैस टरबाइन थ्योरी में पढ़ी थी, नस्ट में, और पढ़ाई भी थी मैंने NED में, नस्ट में और कॉम सेट में, हर जगह एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसका नाम है गैस टरबाइन थ्योरी. तो कोहन एंड रॉजर उसका मशहूर आता है, कोहन एंड रॉजर एंड सरवाना मट्टू. ये बहुत पुरानी किताब है, इसके कई एडिशन शाये हो गए. हमने भी जब स्टूडेंट थे NED के 1974-73 में उस वक्त ये पढ़ी थी और अभी तक ये पढ़ाई जा रही. तो इस किताब में भी ये 1980-90s का एडिशन है. उसने भी कहा कि जिसको डिटेल पढ़ना है गैस टरबाइन थ्योरी तो वो ये पढ़े. लेकिन आपका सब्जेक्ट चूंकि अलग से गैस टरबाइन नहीं है, एक और सब्जेक्ट जो इससे रिलेटेड है आपकी थर्मोडायनामिक्स 2 इसी में जब नोजल थ्योरी आएगी, सुपरसोनिक फ्लो आएगा, तो वो कहलाता है कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, और उसको कहते हैं गैस डायनामिक्स. तो गैस डायनामिक्स भी अलग से पढ़ाई जाती है एज सब्जेक्ट के तौर पर, NED के सिलेबस में है और दूसरी यूनिवर्सिटियों के भी सिलेबस में है, UET में नहीं. तो ये अगला टॉपिक ये इक्विलिब्रियम का, ये फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक में आपको इस तरह मिलेगा कि ये जो है इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, तो ये दोनों के बीच में एनुलस एरिया में
ये फ्लूइड का एक एलिमेंट दिखाया गया है, यहाँ प्रेशर P है, दूसरी तरफ P प्लस DP है, ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, और राइट साइड पे प्रेशर जो है ना P प्लस हाफ DP और P प्लस हाफ DP लेफ्ट साइड पे, और वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है CB, इसको यहाँ C थीटा CW वर्ल्ड वेलोसिटी C दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और ये R है तो ये DR थिकनेस ऑफ द रेडियस जो है ये थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट DR लिए, तो ये XYZ डायरेक्शन में, Z डायरेक्शन में यूनिट है, तो इससे मास पर यूनिट डेप्थ निकल आएगा, यूनिट डेप्थ यानी Z डायरेक्शन नॉर्मल टू द पेपर, नॉर्मल टू द स्क्रीन, वो 1 है, तो रो R d theta dr, so this is how theta is the distance angle between this element, so this is fluid element in radial direction, इस तरह हम लेके हम एज्यूम करते हैं कि CR is equal to 0, यानी रेडियल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो ये जो कंडीशन बनती है रेडियल 3 डायमेंशनल फ्लो 1 अपॉन रो यानी कि पार्शियल ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू R इज इक्वल टू C थीटा, ये जो C थीटा है हमारी किताब में CW है, CW स्क्वायर बाई R, तो in words it is written radial equilibrium equation indicating that the pressure forces on the fluid particles are balanced by centrifugal forces, centrifugal forces और की वजह से वो जो रेडियल फ्लो है वो बैलेंस में रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को अंदर की तरफ खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर की तरफ खींचती है, तो वो एलिमेंट इक्विलिब्रियम में रहता है, इसको कहते हैं रेडियल इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद हम जो ब्लेड बनती है रूट टिप और मिडिल प्रोफाइल उसकी यूं बनती है, तो अगर ये रोटर है तो उसकी डायरेक्शन यूं है, स्टेटर की डायरेक्शन उससे उलट है, तो इस तरह तो आप देख रहे हैं कि इसकी शेप ट्विस्टेड, 3D में अगर इसको देखें तो ट्विस्टेड ब्लेड बनता है, तो ब्लेड प्रोफाइल ऊपर दी हुई है, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, आज तक के लिए टाइम ओवर है, लिहाजा हम इसको मीटिंग को यहाँ खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।